Hello students, good morning and welcome to my new video. देखो students, previous class से पढ़ा थी unit of resistance and relation between ohm and start ohm and relation between ohm and ob ohm. Okay students, so आज हमें देखिबा resistivity, ଗୋଟେ new topic that is called resistivity. Okay, resistivity symbol होती that is rho. Okay students, resistivity symbol टा कौन that is rho. तो फर्स्ट हमें देखिबा व्हाट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट देखो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन डिपेंड करिवो. ओके, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर. ओके स्टूडेंट्स, टू फैक्टर. तो दैट आर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर. क्लियर. तो फर्स्ट देखिबा हमें दैट इज resistance of the conductor depends on its length. by its length करिब चलिबो. resistance of the conductor depends on its length. ता माने कोन that is resistance of the conductor. मन रखो, resistance of the conductor is कोन हबो is directly proportional to okay students, directly proportional to its length. Clear students. देखो resistance of the conductor is directly proportional to its length. ता माने कोन that is R proportional to L. देखो students, R proportional to L इक्वेशन मान दी दो माने L रो वैल्यू बढ़िले R रो वैल्यू बढ़िबो. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट देखो. एटा कोन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ माने R प्रोपोर्शनल टू L. नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट कोन हबो देखो. नंबर 2 पॉइंट हबो देखो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर is inversely proportional to okay students, inversely proportional to its area of cross section, ता माने कोन R proportional to that is 1 by area. ए माने होची एरिया. गिव इक्वेशन नंबर 2. देखो स्टूडेंट्स, resistance of the conductor is inversely proportional to its area of cross section. ता माने कोन R proportional to 1 by A. ओके स्टूडेंट्स, एबे कोन करबा देखो कंबाइनिंग बा जॉइनिंग कहि पारो. कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 कंबाइन करबा कोन मिलबो दैट इज R proportional to L by. ओके स्टूडेंट देखो R proportional to L by. क्लियर. देन देखिए स्टूडेंट्स क्लियरली. देन द फर्स्ट कोन थिला R proportional to L थिला देखो. देन R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 by 1 और 2 का में कंबाइनिंग कला पर कोन मिलला दैट इज R proportional to L by. ओके स्टूडेंट्स, एबे कांस्टेंट ऐड करो. प्रोपोर्शनलिटी रिमूव हो जिबा. देखो गोटे कांस्टेंट ऐड करले कोन हबो प्रोपोर्शनलिटी रिमूव हुए. ओके, दैट इज R is equal to rho L by. देखो स्टूडेंट्स, ए रो टा कोन रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कोन को जाय रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल देखो ऑफ द मटेरियल. ओके स्टूडेंट्स, रो माने कोन रो माने होची रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल. ओके स्टूडेंट्स, तो एठी रो फार्मूला कोन हबो देखो दैट इज RA is equal to rho L. ओके स्टूडेंट्स, तो रो इज इक्वल कोन हबो दैट इज RA by L. देखो दिस इज द फार्मूला ऑफ रो रेजिस्टिविटी. इक्वेशन 3 दे दियो. रो रो फार्मूला कोन हला RA by L. R माने रेजिस्टेंस, A माने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L माने कोन लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ओके स्टूडेंट्स, रो इज इक्वल टू RA by L. ओके, तो रो रो फार्मूला कोन हला RA by L. देखो स्टूडेंट्स, एबे हमें देखिबा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. यूनिट ऑफ रो कहले चलिबो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. गोटे देखो गोटे स्पेशल केस देखिबा हमें. सपोज स्पेशल केस ता कोन इफ सपोज
L ର value 1 मन कर L ର value 1 नेबो और एरिया टा मन कर भी 1 हला सपोज देन कोन हला देखो इक्वेशन 3 टा कोन हला इक्वेशन 3 becomes कोन हबे इक्वेशन 3 टा दैट इज रो इज इक्वल टू हे जीवो r बा r इज इक्वल टू रो हे जीवो देखो माने कोन द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो केते बेले लेंथ ऑफ द कंडक्टर वैल्यू 1 नेबो और एरिया रो वैल्यू 1 एरिया रो वैल्यू 1 और लेंथ रो वैल्यू 1 हला माने करतो कोन हला दैट इज r इज इक्वल टू रो हला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें देखिबा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओके स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट देखिबा हमें यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रो रो यूनिट देखिबा तो रो रो फार्मूला कोन दैट इज RA by L द फार्मूला देखो फर्स्ट SI रे बाहर करो SI सिस्टम पाई देन फॉर CGS सिस्टम ओके तो SI रे कोन हबो देखो दैट इज रो रो यूनिट कोन हला तो फार्मूला RA by L R रो कोन होय रेजिस्टेंस रो SI यूनिट ओम इनटू एरिया रो कोन मीटर स्क्वायर बाय L रो कोन मीटर स्क्वायर बाय मीटर देखो स्टूडेंट्स एठी कोन हला तने मीटर स्क्वायर और मीटर कैंसिल हला तो रो यूनिट कोन हला ओम इनटू मीटर देखो स्टूडेंट ओम इनटू मीटर रो यूनिट कोन हला SI यूनिट ओम इनटू मीटर से बोला सीजीएस से कोन हबो एसयू पई हबो देखो एसयू और एमयू अछि देखो एसयू पई हबो स्टार्ट ओम इनटू मीटर रो यूनिट कोन हला स्टार्ट ओम इनटू हबो सेंटीमीटर ओके स्टूडेंट्स स्टार्ट ओम इनटू सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर एमयू रे कोन हबो रो यूनिट दैट इज ऑफ ओम इनटू सेंटीमीटर देखो ओम इनटू सेंटीमीटर एसआई रे हला रो यूनिट रो माने कोन रेजिस्टिविटी ओम इनटू मीटर एसआई सिस्टम रे सीजीएस से कोन हला एसयू पई स्टार्ट ओम इनटू सेंटीमीटर और एमयू पई कोन हला एमयू पई दैट इज ऑफ ओम इनटू सेंटीमीटर क्लियर स्टूडेंट देखो एटा इंपोर्टेंट स्टार्ट ओम इनटू सेंटीमीटर एसयू पई देन एमयू पई कोन हला ऑफ ओम इनटू सेंटीमीटर ऑफ ओम इनटू सेंटीमीटर क्लियर नेक्स्ट हमें देखिबा डायमेंशन ओके डायमेंशन ऑफ रो बा रेजिस्टिविटी ओके डायमेंशन ऑफ रो तो रो रो फार्मूला कोन अछि रो डायमेंशन इज इक्वल टू दैट इज r रो डायमेंशन इनटू a रो डायमेंशन एरिया बाय लेंथ रो डायमेंशन देखो तो कोन हला रो डायमेंशन देखो दैट इज r रो कोन हुए r रो हुए m1 l2 t-3 अगर पढ़ाई छी a-2 देखो एटा अगर पढ़ाई रेजिस्टेंस माने रेजिस्टेंस रो डायमेंशन m1 l2 t-3 a-2 एरिया रो कोन हुए l2 देखो l2 एरिया l2 लेंथ रो कोन हबो l1 तो दैट इज कोन हला देखो रो डायमेंशन दैट इज m1 एटा l4 हे गेला देखो l4 t-3 a-2 दैट इज बाय l1 अछि देखो देन कोन हला दैट इज डायमेंशन ऑफ रो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू सॉल्व दिस m1 4 minus 1 3 m1 l3 t-3 a-2 this is the dimension of resistivity okay student this is the dimension of resistivity clear students next हमें देखिबा okay next हमें देखिबा conductivity okay students next topic यूनिट देखिबा सॉरी यूनिट देखलु यूनिट रेजिस्टिविटी यूनिट देखा वाला नेक्स्ट हमें देखिबा कंडक्टिविटी ओके नेक्स्ट हमें देखिबा कंडक्टिविटी सिंबल कोन दैट इज सिग्मा ओके कंडक्टिविटी सिंबल टा कोन दैट इज सिग्मा कोन अब डेफिनेशन देखो फर्स्ट वी हैव टू नो द डेफिनेशन कोन अब डेफिनेशन देखो दैट इज conductivity of a material okay students conductivity of a material is defined as the reciprocal of its resistivity ता माने कोन दैट इज sigma is equal to 1 by rho देखो स्टूडेंट्स एटा sigma is equal फार्मूला कोन 1 by rho clear formula sigma is equal to 1 by rho okay students
नेक्स्ट आम देखा यूनिट यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी वेरी सिंपल यूनिट ऑफ सिग्मा तो फर्स्ट एसआई रे देख एसआई रे तो कौन दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो तो रो कौन होता दैट इज 1 बाय रो एसेंट कौन दैट इज ओम इनटू मीटर तार माने को रिवर्स जीव देखो दैट इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ओके स्टूडेंट देखो एटा होजी यूनिट ऑफ सिग्मा दैट इज कंडक्टिविटी क्लियर सिग्मा इज इक्वल कोन हला ओम इनवर्स मीटर इनवर्स सो सीजीएस रे कोन हबो देखो सेम सीजीएस रे हेबो देखो दैट इज ईएसयू देन ईएमयू ओके ईएमयू देन ईएसयू रे कोन हला देखो सिग्मा रो यूनिट कोन हबो ईएसयू रे दैट इज स्टार्ट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ओके स्टूडेंट्स देखो स्टार्ट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स तो बड़ा ईएमयू रे कोन हबो दैट इज ऑफ ओम इनवर्स इनटू सेंटीमीटर इनवर्स ओके स्टूडेंट्स देखो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट ऑफ सिग्मा बाय कंडक्टिविटी क्लियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमें देखो डायमेंशन नेक्स्ट हमें देखिबा डायमेंशन ऑफ सिग्मा डायमेंशन ऑफ सिग्मा बा कंडक्टिविटी तो फॉर्मूला कौन सिग्मा रो दैट इज 1 बाय रो डायमेंशन ओके सिग्मा इज इक्वल रो पढ़ाइतला व्हाट इज डायमेंशन ऑफ रो पढ़ाइतला देखो दैट इज m1 l3 t-3 a-2 तो डायमेंशन पढ़ाइतला देखो m1 l3 t-3 a-2 दिस इज द डायमेंशन ऑफ कना रो डायमेंशन देखो m1 l3 t-3 a-2 ओके तो put this that is m1 l3 t-3 a-2 तो रिवर्स रे कोन आबो सिग्मा रो डायमेंशन देखो दैट इज m-1 l-3 t3 a स्क्वायर देखो देखिए डियर स्टूडेंट्स दैट इज m-1 ऊपर को m-1 l-3 t क्यूब a स्क्वायर दिस इज डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी क्लियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें देखिबा कंडक्टेंस नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंडक्टेंस कंडक्टेंस जी देखो सिंबल कोन कंडक्टेंस माने जी सिंबल डाला जी डेफिनेशन कोन आबा देखो डेफिनेशन ऑफ कंडक्टेंस दैट इज कंडक्टेंस of the material conductance of the material fine conductance of the material is defined as the reciprocal okay reciprocal of its resistance देखो conductance of the material is defined as the reciprocal of its resistance ता माने कोन It is G is equal to 1 by R. It is a formula देखो रेसिप्रोकल कहला परे G is equal to कोन 1 by R. That is कोन conductance of the material is defined as the G is equal to कोन 1 by R defined as the reciprocal of resistance G is equal to 1 by R. Okay students next हमें देखिबा यूनिट ऑफ G देखिबा देखो नेक्स्ट हमें देखिबा यूनिट ऑफ G माने व्हाट दैट इज कंडक्टेंस तो फर्स्ट एसआई रे देखो देन फॉर सीजीएस तो एसआई रे कोन दैट इज फार्मूला होची G इज इक्वल टू देखो 1 बाय R ता माने कोन G इज इक्वल टू 1 बाय R माने रेजिस्टेंस यूनिट ओम इट इज 1 बाय ओम दैट इज कोन ओम इनवर्स ओके स्टूडेंट्स देन ईएसयू पई कोन हेबो ईएसयू पई हेबो देखो स्टार्ट ओम इनवर्स से बोला ईएमयू पई कोन हेबो ऑफ ओम इनवर्स ओके स्टूडेंट देखो एसआई रे हला ओम इनवर्स यूनिट ऑफ G ईएसयू रे हला स्टार्ट ओम इनवर्स ईएमयू रे हला ऑफ ओम इनवर्स ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें देखिबा डायमेंशन ऑफ G डायमेंशन ऑफ G बा कंडक्टेंस ओके स्टूडेंट्स दैट इज 0 डायमेंशन इक्वल कोन हेबो दैट इज 1 बाय R डायमेंशन ओके स्टूडेंट्स that is 1 by कोन होय that is m1 l2 t-3 a-2 এটা ডাইমেনশন রেজিস্ট্যান্স দেখো
M1 L2 T minus 3 A minus, this is dimension resistance. तो कौन है, that is 0 dimension is equal to कौन है, solve कर दियो, that is M minus 1 L minus 2 T3 A square. देखो M minus 1 L minus 2 T cube, ठीक माइनस ऊपर पड़ेगा T cube A square. देखो M minus 1 L minus 2 T cube M A square. This is the dimension of conductance. Okay students, okay, जदि वीडियो जदि भल लगुच माने काइंडली लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई दियो. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास से आउर अधिक पढ़िबा. ओके, जदि क्लास जदि भल लगुच माने काइंडली सब्सक्राइब करो और समस्त को शेयर कर दियो. ओके स्टूडेंट्स, बाय.